In the aftermath of the brutal terror attack in Pahalgam, tourists are gradually returning to the valley. Local markets have begun to reopen, though businesses remain subdued due to reduced footfall. The shopkeepers rely heavily on seasonal tourism for their livelihood. हम यहाँ बिजनेस करते हैं बहुत सालों से, तो इंशाल्लाह यही उम्मीद था कि यहाँ टूरिस्ट आए। यहाँ हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ हालात थोड़ा सा खराब हो गया कुछ दिनों से, ये हमारी बदकिस्मती है। मगर अब यहाँ जो है हालात इस वक्त पूरा ठीक है, कोई डरने की कोई बात नहीं है। हम मैसेज दे रहे हैं पूरे इंडिया में कि यहाँ टूरिस्ट आए, हमारे मेहमान आए, हम इंतजार करते हैं उन लोगों का। इंशाल्लाह यहाँ काम ठीक रहेगा, मगर हमको दुख है ये कि यहाँ हालात थोड़ा सा खराब हो गया कुछ दिनों से, तो इंशाल्लाह आगे ठीक हो जाएगा। On April 22nd, militants ambushed a group of tourists, resulting in multiple casualties and widespread panic. The incident led to the death of 25 tourists and one local. While security forces have ramped up search operations to track down the terrorists involved in the heinous act, PM Modi has given complete operational freedom to the Indian Armed Forces to hunt down the terrorists. The Prime Minister had affirmed that India will identify, track and punish every terrorist and their backers involved in the Pahalgam carnage and pursue the killers to the ends of the earth. मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.